in an environment, and first conditioning is happening through parents, then whosoever in surrounding, be it relatives, be it neighbors or friends, and then we go to school, then we learn something from market, from society, from our teachers, from our books. So lot of conditioning happening, and the child is always observing from the environment, and we observe how to be angry also, how to be scared also, and we also catching the facial expression and the way our father reacts or the mother reacts, and we learn a lot. And that time, what are the experiences of our life, that's how we form our belief, our pattern, our thinking, and a lot of the programming happening subconsciously and we are not aware of. Let's say I'm taking one example where a kid is always beaten up by father, and he being scolded in school by teachers for not doing the homework. And there are so many situations in this kid's life where the kid is only capturing the negative moments, and this kid is basically formed this belief that nobody understands me, nobody loves me, why this is happening to me, something like that, right? So at times people start seeing things in a particular manner, and they are demeaning the positive aspects of life happening to them. Yeah. So at times, over a period of time, when you have this kind of thinking that you are, and the negative emotions are very much intense because you are getting hurt, and you are not feeling validated, you are not feeling loved in that moment. So let's say if a person is forming such kind of beliefs, so how the worldview is. So worldview is world is a very difficult place, life is dangerous, or it's very risky to be here, I need to safeguard myself, I need to protect myself. So the lot of energy is going here in protecting yourself rather than just being free and be who you are and being creative. So but when you start seeing for such a person, if you ask that kid or the person, now the person is maybe 25 years, right? If you ask that person to sit and just write down what all good events happened in life, or maybe in landmark we do one of the exercise to acknowledge yourself, what best you did till date. Like he might get good marks in particular subjects, he also achieved some academic milestones, or some sports or some cultural activities. Maybe he got praised for his particular behavior by his parents, by teachers, or by siblings, or people knows him for his good qualities also. But when we are in that loop, when our mind sees only one aspect and we are giving emphasis on that, so we disqualify those kind of positive things. So this is one aspect, that how our mind works. At times there are so many things. Why? See, we go to a very good place, hilly area, we celebrate birthday, we have some happy moments. How many of us we really remember those kind of things over आपकी लाइफ में 50 चीजें अच्छी हो रही होंगी, मे बी आउट ऑफ 10 दो चीजें आपकी नहीं वर्क कर रही होंगी, लेकिन बाकी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही होंगी, राइट? बट हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? दो चीजें जो आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसी नहीं हो रही हैं। सो और हम उसको क्या करते हैं, माइंड में रिपीट करते रहते हैं। सो इट बिकम अ कांस्टेंट लूप। For example, I was doing something and I hit my hand very badly, so it's paining, right? So what I can do, oh, it's paining, like it's hurting me badly, and I keep on talking about this, right? And other approaches, what I can do,
I can put a band-aid or whatever the medication is required, right? And I can put my hand like this and I'm talking to my friend, okay, what's happening in your life? So, and how are things in family? What's happening? How is life going on? Right? So the pain is there, right? But what will be the intensity when you shift your focus from whatever is required? I did. I maybe took medicine. I might have done something. Maybe hot and cold. Maybe ice pack से मुझे कुछ करना है मैंने किया. मैंने उसको पूरा बैंडेड लगाया. And what is required I did, and now I shifted my focus to what next. Maybe there is a friend, maybe my work is there. So if I'm busy with my work, how many of you experience when you are busy with your work, those kind of negative thinking or patterns, they are very less because your focus is on work in that moment. Your focus is on maybe some important aspect. But when we are free, so then we return back to whatever the painful memories, whatever is not working, we start thinking, and at times we start thinking so much about it that we fill our whole space, and we then start feeling anxiety or pain. We enhance it so much, the intensity becomes so big that we start experiencing it as if it's reality, it's happening right now. So how many of you experience in your life present moment where there is no thought, nothing, and you are feeling blissful? So anyone can reply. Is there any moments in your life when there is no thought and you are just full of bliss, full of peace, nothing is bothering you? Okay. Yes, at times. Yeah, at times. So when it's happening, Shabana? Yeah. So when means you are working, when you have done your work, and then you are suddenly Right. very. So when you are really engrossed in your important work, maybe with artists or musicians, when they are just lost in their painting, when they are performing at a level where they are in flow and they forgot everything, what's happening? Yeah, Sanjay sir, when I did Vipassana meditation, yes, meditation is very beautiful experience when you forget about the whole world and you are just being with yourself, maybe with your breath, maybe you are experiencing a divine flow of energy, and there is nothing. Even if there are few things not working in your life, but your attention and focus is completely there. You are fully present, you are fully aware, and you are not thinking about past and you are not thinking about future, right? So either the whatever we faced in life till date, either the thinking and the thoughts and patterns coming from past, right? Either we are worrying about future, right? So then we can keep on thinking and worrying about something, so the thoughts are coming from there. But if we are really present in the present moment, no thoughts happening, we are just doing action, we are just doing work, and we are at bliss. Be it fully being with other person, we are fully present there, we are attentive listening to that person. Like you see, when you are with someone whom you really love, time flies like anything. You don't even understand that what's happening, how like the whole day or maybe hours like vanish like this, and it's beautiful experience. And when you are hugging your child, so you are in that bliss that no thoughts is coming to your mind. Similar way, when you are near the sea or in hills and seeing the beauty of nature, you are completely there. No thoughts are occupying, no patterns are coming, and you are just fully present there. So one of the practices that whenever we are, wherever we are, I mean, when we are completely present, when we are not allowing our mind to pollute with what happened and what's going to happen,
and we are fully present. So this is the biggest thing our spiritual practices tell us, and we can experience it during the day, 24/7, anytime. So there are so many ways. Few people anchor their, they do this mudra, like every hour they set up their alarm clock like that. In every hour, they work like 45 minutes or 50 minutes. In 10 minutes, they just took to be aware, be present. They do some long breathing. They go for a glass of water and walk a little bit, center themselves, and then again coming back to work. Either they are doing some hand mudras, either they are checking their breath, either they are checking their attention, right? So in Sahaj Yoga practice is what we do. Where is my attention? Is it muddled with something which is not contributing to me right now, or is it on Sahasrara? Like in this area, there is a flow of energy on your this center, the whole body. So we practice being present like this. So there are multiple things in spirituality what we do. There are different mudras also. So we practice that, right? So we can do a small mudra right now. Like put your one hand like this, another hand like this, and do like this, and relax yourself. Put your both of the palm on your lap. Take a long deep breath. Close your eyes. Take a long deep breath. Inhale and exhale. Again, inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale deeply. Relax yourself. Inhale and exhale. So for few seconds, I think everybody experienced that there is no thought. When we are with our breath, when we are holding a particular mudra, we don't feel anything. It's totally peace, and we are feeling relaxed and centered. So right now we can practice another mudra. So put your both of the fingers with your thumb like this. Yeah, everybody understood? Both of the finger and this thumb, you can relax yourself. You can roll your tongue, और आप इसे पैलेट के साथ लगाएंगे like this. Just observe. Observe your breath. Observe the sensation in body. Just fully be aware and hold your tongue to palate. So guys, anybody can share how you are experiencing?
I think it helps you focus. Yeah. So main is our attention. Yeah, we always heard this, wherever attention goes, energy flows. If your attention is in your control, you can think wisely. Maybe something is bothering you. So you can keep that particular thing side and you can focus, okay, what is required? Maybe I'm in office, so this is my duty to complete this work. And I can bring back my attention to that particular thing which was bothering me when I'm free. Maybe I'm a surgeon. If the thoughts are bothering me at that particular moment, I am doing a surgery and I'm not attentive, I might not able to perform, right? So these are two. We did centering exercise. Similar way, there are a lot many things we can do. But today we will explore something from the aspect of psychology. So what happened? What is responsible? So whenever the thought is coming up, right? So first of all, a thought or feeling which is coming, or something happened, maybe that is recorded in our subconscious, and there is a past memory. So the moment something happened, that event triggered that memory or that particular what kind of thoughts are coming to my mind. And now the feelings and sensation, it might be something very much fearful, something which is I'm scared of, or some experience. It triggered those kind of emotions in my heart, in my body. My brain is like becoming hyper right now, and I'm in a particular loop. So that's how we create anxiety. That's how the stress in longer run, if somebody is not addressing how they are thinking, what is their experience, so it result in depression and all. So we will practice few techniques today which might help you. So I'm sharing it. I'm sorry, can you repeat that? How does a person get anxiety or depression through by thinking about it? Yeah, actually what happened, uh, first of all, we have accumulation of experiences from Yes. past. Yeah. And if those things are not resolved for us, either Hmm. we are settled about it, right? Something happened, maybe somebody cheated us, maybe somebody tried to harm our reputation, maybe somebody did very inhuman thing to us, right? Either Hmm. we forgiven that person or we really um, realized it, okay, I did my karma and I have no control on others, right? So Hmm. that's maybe in that particular moment, that person was in that frame of mind. Maybe it was not intentional. Maybe he or she was dealing with something. One aspect is that maybe the person is at that particular level of consciousness in that moment, or maybe there is something happening in his or her life, that's why they behaved like this. Maybe that's their conditioning which they picked up. No person is totally wrong or totally bad. Maybe there are few good aspects, but maybe that kind of thing took over in that particular moment, and that person behaved like this. So I forgive that person. Either that particular moment or thing is settled in your mind, in your heart for yourself. But at times, what happened, when we are not aware, when we are in ignorance, we keep on accumulating those things. Let's say there are different people in our life, maybe few are in family, and they keep on doing certain kind of behavior. They keep on practicing certain kind of selfish things, which is really annoying, right? Maybe few people, they really criticize others, or they pull others down to make themselves great, right? So different kind of people having different kind of programming. Maybe they are in the energy of lack, and they don't understand that universe is like abundance, and
everything is there for everyone, and there are good ways to achieve that success rather than pulling others down and taking advantage of others' niceness or whatever. So everybody is not like you. And what is in our control? In our control, we have our thinking, our actions, our reactions, right? How we deal with situation. Because at times, in spite of you communicating, in spite of you having a very good bond, still people cheat you, still people demean you, and you can't really change others. Like when we are walking on earth, we can't put carpet on the entire earth. We can wear shoes, comfortable shoes, right? So ultimately we can work on ourselves. So whenever these memories and these experiences and these kind of feelings and emotions stored in our subconscious and in our memory, so unless and until we resolve those things, unless and until we give it a new meaning, right, it keep on haunting us. But that And is assuming that you're thinking about all this. Suppose you had a bad experience, yeah, then you think about it and then you feel bad. yeah, yeah. But then suppose, is it possible for you to feel bad without having any of these, without thinking about any of these things? I Yeah, mean, but your ultimately, sir, we have to resolve it for our betterment. Like, so at times people suppose you stuck have in the settled same it. loop. Suppose you have said, okay, you have come to terms with whatever is happening to you, Mhm. problems or whatever. Then will it still bother you? Will you still be in that mode? No, no. No, but at times few people keep on accumulating those things and they never accepted it. Ki, okay, Mm-hmm. this has happened and this happened in past, and they are bringing everything in the present moment, and they keep on relating maybe some other person. Let's say two people are in partnership, right? And one partner deceived others, right? So one experience that happened, it doesn't mean that everybody is going to be the same, right? Mm. So at times we perceived our present reality based on past, Yeah. and whenever such kind of things coming up, those kind of feelings and emotions and everything we experience in our body, like, and we give it a name like anxiety. And if constantly, if a person is in a negative programming or negative loop and nobody is there to really support them, at times people don't get support from family or whomsoever they trust, maybe their partner, so they go in depression. Don't happen in 1 year or something. It took a lot of time, like 10 years, 15 years, and the person is struggling inside. So Mm. it's a long chain. I mean, certain kind of repeated situation in a happening in a life of person, and the focus is there. So when our focus is there, we are saying ourselves like this. Yeah, the more those kind of things happening in our life, and like what you focus on, you will attract more, right? So if let's say 4, 5, 10 things happened in our life, and we form that belief, people are like that, males are like that, females are like that, boss is like that, or maybe politicians are like this. But okay, there are people like that, but there are good things also. So where is our focus? So we become scared, and whenever something happened and whenever we saw something in news, we reaffirm it, Mhm. and we are continuously feeding that particular thought, that particular belief. Like Mm. I don't know how many are here from landmark family. So when we go, so the belief we formed as a 3 years old kid, as a 4 years old, or as a 10 years old kid about our parents, that nobody loves me, right? But is it true in all the scenarios? You might Yeah. have experienced so much of love from your parents in different manner. That might be that you want a hug or pat on the back from your father, but his way of loving you is different. It doesn't mean that your father is not loving you. Yeah.
but you formed an opinion and you are seeing your father in a particular light. And all the time he says something, he did something, every time you repeat, like, देखा, फिर उन्होंने ऐसे ही हरकत किया, nobody lost me. So that's how we keep on accumulating our belief, our experiencing, our experiences, and then we are forming our belief, then we are forming our thought pattern, and something happened. So either the thought or emotions are coming up, and rather when we are not in our rational thinking, how we perceive, we are perceiving from old belief, and that is not resolved for us, that particular moment or situation, and we never thought what we are thinking whole day. If you are really going to observe what you are thinking whole day, so there are lot many thoughts are coming, because we are in touch with social media, we see the entire news of whole world, and lot many channels are just showing the negative aspect, right? And hardly few, I mean, we can see the positive things also. So the most of things are coming to us in a danger zone or scary things, right? And when we listen to some headlines and news or something, and most of the people, when they talk about their problem. With married couple, they are enjoying their married life also, and they are having a lot of bliss also in their life. But where our attention stuck in the problematic area, and when they share with their friends, they share all such kind of event, which is really, really not working for them. So, हम माइंड में क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम किस चीज को एनर्जी दे रहे हैं, so that will be becoming stronger, right? If we feed it these kind of thoughts that life is beautiful, people are there for me, I'm getting good support, and I came so far, I achieved so many things in my life, and I'm good, I'm having these qualities, I'm confident, I'm smart, I'm a divine child, and divine is taking care of me every minute, every single second. And since my birth, divine took care of my food, my every requirement. So right now also, whenever I am entering an unknown territory, the divine will take care of. I just need to do my work. But how many of us all the time thinking like this? We bog down with negativity, and there is a programming there. So today we are going to dismantle those kind of thought patterns and programming with few techniques. So hope, Okay. Sanjay sir, I answered your question. Yeah, okay. So fine. Thank you. Thank you. So it's not happening with everybody. I'm not generalizing it, but in few cases it happens. Can you please give me sharing rights, Shabana? You already have that. I'm not able to share. Can you give it to another because I joined from. Yeah, I have. Okay. Where have you done landmark from? Yeah, I done landmark in Delhi itself. Yeah, it's way back. Quite good, I heard. In which year? And who was your coach? So my coach was Praveen Puri. Okay, very good.
Very good. He was also very good. Well, every landmark forum leader is a good coach. I have done the full curriculum. Great, sir. And assisted as well for many years. So I have done complete, did till ILP and communication also. And then I completed because of my work. Okay. Very good. Very good. So now you are a highly evolved person. Whole of my family has done it anyway. So guys, can you see? Yeah. Yeah. So these are some of the patterns which is not helping us, right? So at times we think in ways all or nothing. If anyone can relate to it, no one loves me. It's all and nothing thinking. Yeah, You I don't know generalize why it. that is. Yeah. There is that thinking where, even say the gun culture in America, where the gun lobby says that, if you want to kill someone, then you can do it without guns as well. So there's no need to ban guns. Yeah. So that thinking is like, it's absolute. Either you don't need, that sort of thinking, that either this or that and nothing Yeah. else in between. Yeah. So life is happening in gray. It's never is black and white. Yeah. When we see Yeah. reality, we are not seeing reality as an absolute reality, right? Let's say a kid is very naughty and the kid broke the window, like the glass window, and 10 people standing there, they perceive this reality in a different manner. One will say, punish him, uh, beat him. He's very naughty. He's not understanding. He broke my window also, right? And other person is saying, oh, the kid seems to be very innocent, and this thing is happening when the kids play cricket and all. So not a big deal. And now the kid got fainted. So somebody will say he is doing notanki, right? Other person Hmm. will say, oh, bring some water. Third person will say, let's took him to the hospital, right? So everybody is perceiving that particular reality in different manner. So it's up to us also that what is our way of perceiving things and how we formed, how we seeing this world, right? If your experiences are very good in life and you are happy, if your everything is working in your life, you perceive it that point. So the world is a very beautiful place. People are very humble, and everybody loves me, right? And when you do, it's need not to do hard work. You just need to do smart work, and you grow like this. But at the another side, if your experiences of life is something else, so those experiences formed your belief, form your pattern. But still, we cannot, I mean, either this, किसी ने आपको एक बार बोला और आपने बेस्ड आप दूसरों का दिमाग पढ़ने लग जाते हैं, लाइक कि ऐसा ही होगा इसकी शक्ल ऐसी है, जैसे कई लोग होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, वो करते हैं, ओके दिस नंबर इज लाइक दिस, 5 नंबर इज लाइक दिस, ये ऐसा ही होगा, एंड एवरी 5 नंबर इज नॉट गोना बी लाइक दिस, राइट? काफी ट्रेड्स हो सकते हैं आपकी, बट
और एक ही डेट पे हजारों बच्चे पैदा होते हैं, एक टाइम पे डिफरेंट पीपल पैदा होते हैं, स्टिल दे आर डिफरेंट in their traits, in their personality, out of their conditioning, out of, so we can't form that kind of belief. Yeah. Second is over generalizing. So आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल ने बहुत कुछ सुन लिया है कि शादी में ऐसा होता है वैसा होता है, आजकल लोग ऐसे हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मदर इन लॉ ऐसी होती है. एवरी मदर इन लॉ इज नॉट लाइक दैट, एंड all the males are not like that. Similar way, all the females are not like that. But whatever we listened so far, we are over generalizing that, right? So we generalize everything. We are not seeing the true picture. We are not even using our logic. The moment आपका किसी हो सकता है कि किसी गुजराती के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के साथ या पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉसेस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, तो हमने जनरलाइज कर दिया कि बॉसेस आर लाइक दैट, कॉर्पोरेट्स आर लाइक दैट. बट देयर आर कॉर्पोरेट्स जो कि अपनी टीम को अपनी फैमिली की तरह भी रख रहे हैं, एंड वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट ऑल्सो. सो वी जनरलाइज, राइट? सो नाउ मेंटल फिल्टर. सो आपका अभी जैसे लैंडमार्क में बोलते हैं कि चश्मा बन गया है. सो हम एक चश्मे से देखने लगते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके फादर ने उसे, उसकी गलती नहीं थी और उसकी पिटाई हो गई. उसके बाद उसको बोर्डिंग में भेज दिया गया पढ़ने के लिए. तो उसको लगा कि मेरे मॉम डैड तो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे अपने आप से दूर कर दिया. दो मॉम डैड ने भेजा उसे कि वो वहां पे ग्रो कर सके, वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन सके, उसकी स्टडीज वहां अच्छी हो सके. नाउ ही लव्ड समवन, राइट? एंड उसको लगा कि मैं मदर फादर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. घर से बाहर निकल जाओ तुम, यदि यही करना है तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें घर से. देन अगेन क्या अफर्म हुआ कि माई फादर डजंट लव मी, राइट? एंड बेटे को जाना था किसी और फील्ड में, फादर ने जबरदस्ती दूसरा करियर चूज कराया. देन अगेन व्हाट इज गेटिंग अफर्म हियर? माई फादर डजंट लव मी. सो आपका जो फिल्टर है आप उसी से देख रहे हैं. आपने किसी भी इंसान के बारे में जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज बना लिए हैं, आप वहां से उस इंसान को देख रहे हैं, rather than seeing a holistic picture कि वो इंसान कैसा है. So just a second. So हम यहाँ पे अपने मेंटल फिल्टर से, तो हम हर जगह जो भी चीज होती है उसको फिल्टर से देखते हैं. उसको हम ऐसे नहीं देखते हैं कि सबके अपने अपने फिल्टर हैं. हो सकता है एक चीज आपके लिए अच्छी है लेकिन दूसरे के लिए अच्छी नहीं है. सो वो लोग जो हैं उसको उसी फिल्टर से देख रहे हैं. So there is some problem with share. My phone battery down. So I'm telling you, I can't share the screen right now, but I'm telling you from. स्क्रीनशॉट तो आया था आपका. Yeah, but I think कुछ प्रॉब्लम हुआ है. चलो एनीवेज, सो हम बात करते हैं. तो हम ऐसे बहुत सारे हमारे मेंटल फिल्टर होते हैं, हर किसी के होते हैं, कि हमने जो भी एक ओपिनियन फॉर्म कर रखा होता है, हम एंड मूवमेंट भी देखेंगे तो अभी वो इंसान जैसा 10 साल पहले था, 5 साल पहले था. एवरीबडी इज इवॉल्विंग, दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. और लेट्स से कि आप ब्रदर सिस्टर हैं या भाई भाई हैं, आप साथ में नहीं रह रहे, लेकिन उनकी जो 2 4 5 मिस्टेक हैं, आज भी आप उन्हें उसी मेंटल फिल्टर से देख रहे हैं, रादर सीइंग दैट पर्सन फ्रॉम राइट नाउ. अभी वो कुछ अच्छा भी करेंगे तो आप उस अच्छे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, एंड वी हैव दैट मेंटल फिल्टर फॉर दैट पर्सन, राइट? इट हैपेंड टू अस. And then we disqualify the positive aspect.
कि कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारी गुड थिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे होता है, जब हम नेगेटिव लूप में होते हैं, तो जो पॉजिटिव भी हो रहा होता है, कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, हम उसको काउंट नहीं करते हैं, जो हमारी लाइफ में चीजें अच्छी हो रही हैं। हम ज्यादातर फोकस हमारा उसको इन्हांस करके देखते हैं कि जो चीज डैमेजिंग है या जो चीज हमारी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है। ऑल्सो जब हम नेगेटिव लूप में होते हैं, तो देन वी जंप टू कंक्लूजन्स वेरी क्विकली। हम दूसरों का माइंड रीड करते हैं, या हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एंड वी कंक्लूड, वी डोंट गिव टाइम। किसी भी चीज में यदि आप किसी रिलेशनशिप में भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली, सो आपने सामने वाले इंसान ने 2-4 गलतियां की और आपने वैसा कंक्लूड कर लिया उस इंसान के बारे में। वी डोंट गिव इनफ टाइम एंड स्पेस दैट रिलेशनशिप टू बी इवॉल्व एंड ग्रो, राइट? सो उसके बाद क्या है कि हम जो है एक वर्ड होता है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिंग थिंकिंग, राइट? आप क्या कर रहे हैं कि जो अच्छी चीजें हैं उसको श्रिंक कर रहे हैं, एंड आप आउट ऑफ प्रपोर्शन चीजों को देखते हैं। जो नेगेटिव एस्पेक्ट होगा उसका बहुत इनलार्ज करके बढ़ा चढ़ा के देखेंगे, और जो अच्छा होगा उस पार्ट को आप मिनिमाइज कर देंगे। when we are in that particular loop of maybe depression, anxiety, or maybe when we are thinking negatively, and like emotional reasoning होगी हमारी, logical reasoning नहीं होगी। So यदि हम इमोशनली एक पर्टिकुलर वे में फील कर रहे हैं, तो हमारा वहां पे ये होगा कि बिकॉज ऐसा ऐसा हुआ, लोगों ने मुझे ऐसा बोला, तो आई मस्ट बी एन इडियट, और बिकॉज एवरीबडी सेज लाइक दिस। ऐसे आप बहुत बड़े सीईओ हैं कंपनी के, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, या फिर आप अपने वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा होता है इनसाइड, मैं बेवकूफ हूँ, मैं तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग यू, लेकिन आप इमोशनली जो वो पर्टिकुलर आपका एक वे है, आप उससे उतना अटैच हो गए हैं कि आप इमोशनली सोच रहे हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि खाने को भी खाने की बजाय आपने स्मेल करके देखा उसे, अब गाने को भी आप स्मेल करके जो है वो फील करना चाह रहे हैं, रादर गाने को सुन के फील करने के। सो दिस इज लाइक इमोशनल थिंकिंग यू आर डूइंग, इमोशनल रीजनिंग यू आर डूइंग, एंड वी आर ऑलवेज लाइक very critical towards ourselves in that particular mood, and very critical towards others. So the inner critic is there, and in Vedanta language inner critic को आप बोलते हैं सुपर ईगो, कि आपका एकदम जस्ट ये होता है कि everything should be perfect, a person should be like this, he should be like this, one must do things like this, and we see ourselves also, we have high expectation from ourselves, and we behave like a perfectionist, and the similar way we have those kind of expectation from other people also in our life. So we apply a lot of should and lot of must, and we end up being critical and hello, who's there? Can we mute? Okay, so this happens. And also when we are in such scenarios, we can't think properly, and we label also. So there is another aspect of we label people, we label ourselves like that I'm a loser, I can't do things properly, I'm useless, or he is good for nothing. So we assign label to ourselves also, and we assign label to others, and we personalize. So यदि कोई इंसान किसी और भी चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं कि हर चीज लाइफ में जो भी हो रही है आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लाइक मे बी कि आपकी मदर का उसमें कुछ रोल होगा, कुछ फादर का रोल होगा, कुछ आपके फैमिली का रोल होगा, मे बी आप टीम में हैं तो बाकी टीम मेंबर्स का कुछ रोल होगा, बट सब कुछ मेरी ही गलती है, लाइक इट वाज ऑलवेज योर फॉल्ट। तो आप इस तरह से चीजों को देखते हैं। Now
ये तो कुछ वेज हो गए कि जिस तरह से हम सोचते हैं या जिस तरह से हम जब हम थोड़ा डिप्रेशन में होते हैं या थोड़ा टेंस होते हैं या थोड़ा एंग्शियस होते हैं तो हम चीजों को ऐसे देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो देर इज वन टेक्निक इन साइकोलॉजी दैट इज ABCED मॉडल, राइट? सो इन दिस मॉडल वी सी, ओके, आपकी लाइफ में कुछ 10 साल पहले हुआ था फॉर एग्जाम्पल, राइट? लेकिन अभी वो ट्रिगर हुआ है। वाई दिस इज ट्रिगर्ड? अभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने उस पास्ट मेमोरी को ट्रिगर कर दिया है आपके लिए। सो मे बी इन सर्टेन सिनेरियोज, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि डेथ ऑफ सर्टेन that death of your friend or somebody in family, and that is a very triggering event for you. So this became activating event, और उसने पास्ट में भी आपने किसी को लूज किया था, आपने किसी लव्ड वन को, उसको ट्रिगर कर दिया। नाउ बिलीव अबाउट दैट इवेंट और एडवर्सिटी। अब किसी इंसान ने जिसने अपने बहुत ही करीबी, लेट से उसने अपनी मदर को लूज किया है और अभी उसने किसी और लव्ड वन को लूज कर दिया, तो उसका बिलीफ क्या है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ भगवान मुझसे छीन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। या कोई भी जो मेरे, मतलब प्यार तो मेरी लाइफ में नसीब ही नहीं है, मुझे जब भी प्यार मिलता है मुझसे छीन लिया जाता है, राइट? अभी इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, इसी से आप कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। कॉन्सिक्वेंसेस, या तो हम खुद को बहुत गिल्ट में ले जाएंगे, खुद को बहुत ब्लेम करेंगे, या भगवान को ब्लेम करेंगे, या अपने आप को अपशगुन मान लेंगे। यदि हम रैशनली थिंक नहीं करें, वी कैन थिंक एनीथिंग, एंड वी कैन, दिस कैन इम्पैक्ट अवर हेल्थ ऑल्सो इफ वी आर नॉट थिंकिंग वाइजली। नाउ अभी ई का मतलब क्या है कि आप कोई नया बिलीफ बना रहे हैं जिससे कि आप पुराने बिलीफ को रिप्लेस कर सकें, जो कि आपका इरैशनल बिलीफ है, उसको रैशनल बिलीफ से रिप्लेस कर सकें। तो नया बिलीफ क्या है कि लाइफ एंड डेथ इज नॉट इन अवर हैंड्स, राइट? कोई ऐसे हेल्थ इशू थे या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अभी जिसका भी आपके फैमिली में डेथ हुआ है, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। We did our level best. We provide all the support, all the good diet, medical facility, whatever is required. I was there to support financially, emotionally, mentally, physically. The best, whatever in my hand, I did it, right? And still, I mean, this is not in my hand. A person has to go. जब उसका टाइम आ जाता है तो उसको जाना होता है। सेटिस्फैक्शन इज दैट कि इट्स नॉट लाइक कि आई एम मनहूस और मेरे को लाइफ में प्यार नहीं, मतलब जिससे मैं प्यार करूं और वो मुझसे छीन लिया जाए। इट्स नॉट, इट्स कि उस इंसान का टाइम आ गया था, तो आपने किसी भी रैशनल थिंकिंग से, रैशनल बिलीफ से उसको शिफ्ट किया। एंड नाउ अब आप क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक बार में नहीं हो, क्योंकि जो आपका वो पेन था, वो हर्ट था, वो बहुत ही ज्यादा डीपर है और उसको टाइम लगेगा हील होने में। तो आपको बार बार खुद को बताना होगा, रादर उस चीज के लिए खुद को कोसने के, उस चीज के लिए खुद को ब्लेम करने के, उस चीज के लिए खुद को जिम्मेवार ठहराने के, उस चीज के लिए लोगों को जिम्मेवार ठहराने के, या आप जो है भगवान से आप ट्रस्ट हटा दें या उस यूनिवर्स से ट्रस्ट हटा दें, तो उस चीज में आपका क्या होगा कि आप उस बिलीफ को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, उस बिलीफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने लोग चीजें भूल जाते हैं, या सो कई बार ऐसा होता है कि एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, लेट से आपने पहले 4-5 बार अपना कीज या अपना मोबाइल, या आप एसी ऑन करके घर से बाहर चले गए, आपने गैस ऑन करके भूल गए, आप प्रेस ऑन करके भूल गए। नाउ आपके आसपास के लोगों का तो बिलीफ आपके बारे में हो चुका है कि दिस पर्सन इज केयरलेस, राइट? अब आपका भी बिलीफ अपने बारे में क्या हो रहा है कि सॉरी, आपका भी बिलीफ अपने बारे में हो रहा है कि मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है, राइट?
So you have this belief कि I forget everything. So you are now keep on rechecking. आप डोर लॉक कर रहे हैं तो आप उसे 4 बार चेक कर रहे हैं कि मैंने ढंग से डोर लॉक किया कि नहीं किया. You have this particular tension कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं कभी अपना पर्स नहीं भूल जाऊं. तो आप किस चीज को अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो अभी फिर से क्या हुआ ट्रिगरिंग इवेंट कि आप कहीं थे और आपने अपनी कीज आपने पता नहीं कहाँ रख दी. तो अगेन आपको डांट पड़ी, आपकी वाइफ ने आपको डांटा या आपकी मदर ने आपको डांटा. तो इस टाइम पे फिर से वो एक्टिवेट हो गया कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी, है ना. मुझे डॉक्टर से या तो अपना इलाज कराना चाहिए कुछ. व्हाई आई एम लाइक दिस, आई एम सो स्टूपिड, मैं अपनी चीजें रख के भूल जाता हूँ. राइट. ये आपका एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया. जब भी ऐसा हुआ तो आपने अपने आप को एक बार दोबारा बोल दिया कि आई एम स्टूपिड, आई हैव सम प्रॉब्लम. राइट. अब आप उसको उसके बाद रैशनली यदि देखते हैं, ये तो आपका फर्स्ट बिलीफ है कि आप स्टूपिड हैं, आप भूल जाते हैं चीजों को. उसके बाद आपका जो है, यदि आप रैशनली सोचेंगे कि मे बी यू आर डीलिंग विद सम अदर इश्यूज इन ऑफिस, मे बी यू आर डीलिंग विद सम फैमिली प्रॉब्लम्स, maybe you are under a lot of stress due to particular scenarios, and that's why this is happening. Maybe you can remind, there are so many scenarios जहाँ पे आपने सारी चीजें अपनी इंटैक्ट रखी थी. ऐसा नहीं है कि आप जब भी जा रहे हैं अपनी कीज भूल जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं अपना मोबाइल छोड़ के आ जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं अपना वॉलेट. कितनी बार ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में 3 या 4 बार हुए होंगे, बट 90 times you remember your things. So now we are shifting this belief from one of the rational beliefs that was situational. I was under a lot of stress, lot of work pressure, I haven't slept properly. So इस वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ. और अभी आप उसको जब भी बार बार ये बिलीफ या बार बार ये थॉट आएगा आपके माइंड में, तो जब आप किस चीज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, जब आप फोकस डालेंगे कि 95 टाइम्स मैंने उस चीज को ठीक किया है और 5 टाइम्स ऐसा हो गया सिचुएशनली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बिलीफ आपका ब्रेक हो जाएगा. राइट. सेकेंड थिंग, आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी चीजें जो भी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वॉलेट है, आपकी कीज है, आपका मोबाइल है, कि आप जाने से पहले ये प्रैक्टिस कर लें कि मैं अपनी टेबल से जब उठ रहा हूँ या मैं कहीं से उठ रहा हूँ तो जस्ट रिमाइंडर टू मी कि मैं चेक कर लूँ यदि ऐसा हो भी रहा है तो. दैट्स इट. अदरवाइज ये लूप क्या क्रिएट हो जाता कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय मेमोरी, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय माइंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. राइट. तो ऐसे आप किसी भी बिलीफ के लिए कर सकते हैं. सो राइट नाउ वी विल वर्क ऑन आवर बिलीफ. सो आई नीड अ वॉलंटियर सो दैट हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे काम कर सकें. Anybody would like to volunteer? Belief yeah. about what? हाँ जी. Belief about what we are to. Anything. What you say to yourself. These days, I have actually given up on beliefs and things like that. That should and must and all that sort of thing. I don't believe in all that. Yeah. Yeah. Any pattern which is like bothering. I can share if you want. Yeah, please. मेरे को लगता है कि मेरे को बात ठीक तरह से करनी नहीं आती. Okay. Okay, great. आपको पहली बार ऐसा कब लगा? जब मेरी वाइफ ने कहा. Okay, जब आपकी वाइफ ने कहा. राइट. सो बट ऐसा आपको कितने लोग कहते हैं? Sorry, क्या था exactly? What was that? सर ने बोला कि इनको लगता है कि इनको बात ठीक से करनी नहीं आती है. अच्छा. He is not able to communicate properly, right? So आपकी वाइफ ने ये कहा, लेकिन आपको बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कलीग्स होंगे, बहुत से लोग आपसे आप लिखते भी हैं, right? So how many people say this to you? Otherwise, very few people. Otherwise, very few people, no?
So but wife is very important. And ऑफिस में भी मेरे को एक दफा बॉस ने कहा था कि आप हम्म। अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा लो. दैट इज आल्सो वन टाइम. So आपने इससे क्या perceive किया? Is there any problem with language, like English language, or is there any problem with attitude? Is नहीं, any मेरा particular? वॉइस का वॉल्यूम ऊंचा है. दैट इज ए Mhm. प्रॉब्लम. तो उनको लगता है कि आप डांट रहे हो या ठीक तरह से वो बात नहीं करते. Okay, great. So but क्या आपकी वाइफ को हमेशा ये लगता है कि आप ठीक तरह से बात नहीं करते, या कभी आपने ऊंची आवाज में बोला बस उस मोमेंट में उन्हें लगा ऐसा? मेरे को तो लगता है मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसको लगता है कि ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, मेरे को डांट रहे हो. या सो ये आपका बिलीफ पैटर्न नहीं है, ये आपकी वाइफ का बिलीफ पैटर्न है कि क्योंकि हर इंसान की पिच एक डिफरेंट है. कुछ लोग बहुत हाई पिच पे गाना गाते हैं एक, है ना, और कुछ लोग वैसा मॉडरेट वाला स्केल पे गाना गाते हैं. आपने लंबी जुदाई वाला गाना सुना होगा, तो वो सबके बस की भी बात नहीं है कि वो उस पिच पे गा सके लोग, राइट? एंड दिस इज गॉड गिफ्टेड, राइट? और कुछ आप यदि पूरे दिन या मतलब इतने सालों से आप अपनी वाइफ के साथ हैं, जब आपने प्यार से अपनी बात रखी होगी या उनको हंसाया होगा या कहीं घुमाने ले गए होंगे, कभी मनाया होगा, तब उस मोमेंट में आपकी वाइफ को ऐसा लगा, इवन इफ यू हैव द हाई पिच? नहीं, उस टाइम तो नहीं लगा. उस टाइम नहीं लगा ना? सो इन पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको कोई बात नहीं पसंद आई होगी और आपने पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए होंगे या फिर आपने पर्टिकुलर टोन यूज की होगी, तब उनको ऐसा लगा? नहीं, एक्चुअली मेरे को तब लगता है जब मेरी कोई चीज, जब मेरी एक्सपेक्टेशन या मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो उस टाइम टोन हाई ऊपर हो जाती है. उसको लगता है कि मैं डांट रहा हूँ. ओके. एंड आप डांट रहे होते हैं एक्चुअल में या जस्ट टोन हाई हो जाती है? टोन हाई हो जाती है. ओके. सो दैट इज विद बहुत जल्दी एवरीवन. बोलते हैं, हैं? you know, you speak fast, एकदम abruptly. आवाज नहीं वो आई मेरा यार. पूरा कमेंट है मेरा, सॉरी है if I offended you. आई कुडंट अंडरस्टैंड इट. आई कुडंट हियर इट. प्रीतम सर, ही इज सेइंग कि आप बहुत फास्ट बोलते हैं. अच्छा अच्छा. तो ठीक है, वैसे हो सकता है कि जो आपका फास्ट है वो संजू सर के लिए फास्ट हो, वो दूसरे के लिए ना हो. रिएक्शन फास्ट होता है बस, और कुछ नहीं. रिएक्ट जल्दी कर देते हैं. राइट, तो रिएक्शन फास्ट है. रिएक्शन फास्ट है. सो एक चीज तो आपको पता है कि रिएक्शन फास्ट है, बट जब आप अच्छे मूड में होते हैं, जब आप बॉडी में अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, जब आप ठीक ठाक मूड में होते हैं, तब भी आपका रिएक्शन फास्ट होता है? नहीं, तब नहीं नॉर्मल है. होता? जब आप यदि या तो फिजिकली आपको कुछ चीज बॉदर कर रहा है, या फिर आप कोई वर्क रिलेटेड आपको कुछ बॉदर हो रहा है, या घर में कोई काम ठीक से नहीं हो रहा होता है, तो वहां से जब एजिटेशन आता है, जब आप टेंस होते हैं, तभी आपका फास्ट होता होगा, राइट? So that you can practice with breathing. Practice, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे को वैसी सिचुएशन में भी कैसे काम रहना है. मे बी यू कैन यूज सम NLP टेक्निक ऑल्सो, कि जब मेरे को ऐसा लगेगा तो मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूंगा. अच्छा. जो आप अपने ब्रेन को एक एंकर दे दें कि जब भी मुझे टेंशन होगी तो आई विल डू दिस एंड आई विल बेसिकली रिलैक्स. मेरे को एडवाइस यही किया गया कि पहले ज्यादा सोच लो, उसके बाद रिएक्ट जल्दी नहीं. नहीं, सोचने से भी कई बार, अब बहुत ज्यादा सोचने से भी बॉडी में बहुत हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है. व्हेन यू आर थिंकिंग 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 थिंकिंग, तो आप वैसे ही एजिटेटेड हो जाते हो. वो एक प्रॉपर थॉट थिंकिंग करके बोलना अच्छी बात है, बट व्हेन यू आर नॉट सेंटर्ड, जैसे वो हर इंसान की लाइफ में होता है, 24/7 वी आर नॉट इन सेम स्टेट. आप जब मेडिटेशन करके आए हैं, जब आप वॉक करके आए हैं, जब आपने रिलैक्स किया है, आप अच्छे से सो के उठे हैं, तो आप डिफरेंट स्टेट में होंगे. बट जब आप स्ट्रेस में कोई काम कर रहे हैं, कुछ डेडलाइन है, राइट, उस टाइम आपको कोई बॉदर कर रहा है ना, आपको कुछ डिलीवर करना है, और उस टाइम आपको बच्चे बॉदर कर रहे हैं, तो आपका अलग वे होगा उनसे बात करने का. उस टाइम आपकी वाइफ, चाहे वो कितना भी प्यार से आपको खिला रही हो, खा लो खा लो खा लो, है ना, आपको लगेगा मुझे ये काम करना है, अभी खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट?
So there is nothing wrong with you. एंड आपकी वाइफ का हो सकता है कि उनको बचपन से कभी उन्होंने लाउड वॉइसेस सुनी नहीं हो, वो बहुत पैम्पर चाइल्ड हो, उनके घर में किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की हो, तो उनको लाउड नॉइस से प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका परसेप्शन ये है कि किसी ने लाउड बोला तो बहुत ही एक तरीके से डिवेस्टेटिंग एक्सपीरियंस हो गया उनके लिए, राइट? बट दैट्स हर. बट उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उस टाइम बात ही ना करें, कोशिश करें आप जब थोड़ा कूल हो जाएं, जब आपके पास टाइम हो, आप पानी पी लें, थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे तो अपने आप ये चीज वो हो जाएगी. एंड as far as concerned with your fast speaking, are you always speaking fast? मेरे को तो नहीं लगता कि मैं फास्ट बोलता हूँ. Okay, yeah. So reaction quick है, that's the thing. Right. वो रिएक्शन तो एक ये होता है ना, फ्लक्स में होता है. सो उस टाइम आप अपने रिएक्शन जब आपको करना हो, 2 मिनट आपको गुस्सा भी आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं. थोड़ा सा ब्रीदिंग को ले आइए तो थोड़ा सा आपको टाइम, आप अपने आप को एंकर ऐसे कर लीजिए, क्योंकि हमें भी अपने माइंड का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है. लेट से मुझे पता है कि मैं रिएक्ट करता हूँ बहुत जल्दी, राइट? ये मेरे को एहसास है, और जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो फिर उस टाइम पे कुछ गड़बड़ होता है और बाद में मैं रिग्रेट भी करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, इसकी जरूरत नहीं थी. सो उसको आप काम डाउन करने के लिए आप थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हैं उस टाइम पे, यदि कर सके तो. और वो भी नहीं ध्यान रहता है तो आप उसको लिख लें पहले. मतलब उस टाइम पे गुस्सा आ रहा है ना, तो लिख लें जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा. लेट से आपके हाथ में कुछ नहीं है, अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, आपने पूरा पेपर पे उतार दिया, 2 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें तो कोई काम की बात ही नहीं थी. so there are so many ways, but like we are talking about this pattern, तो यहाँ पे ये आपका पैटर्न नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी वाइफ को ऐसा लगता है लाउड नॉइसेस की वजह से. सेकेंड थिंग, यदि आपका रिएक्शन का पैटर्न है तो उसको आप रैशनली थिंक करके, जो आप रैशनल ब्रीदिंग वाला डिसीजन ले रहे हैं, या आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ा दे रहे हैं, तो जितना आपका गैप बढ़ता जाएगा उतना उतना आप अवेयर होके बात करेंगे. दैट्स ऑल, राइट? बट आपका जो अपने बारे में बिलीफ है कि आपका कम्युनिकेशन जो आप बोल रहे थे, फर्स्ट आपने सेंटेंस क्या बोला था कि लोग, मतलब कि मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ऐसा कुछ, ठीक से कम्युनिकेट, राइट? सो आपका कम्युनिकेशन बहुत सुपर्ब है. आप लिखते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं और आप बहुत बहुत कुछ ऐसा करते हैं, तो उसके लिए प्रीतम सर के लिए ये लागू नहीं होता है. ठीक है, थैंक यू. सो सॉरी, आज कुछ प्रॉब्लम था और यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मेरा फोन चार्जिंग में नहीं था, तो मैं आपको ज्यादा शेयर नहीं कर पाई हूँ. बट एक ये जो मुद्रा है, ये आप बीच बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपको रिलैक्सेशन, आपको बीच में सेंटर्ड होना हो. दिस इज वेरी पावरफुल मुद्रा. ये आप टंग जो अपने पैलेट में लगाएंगे एंड यू पुट योर हैंड लाइक दिस, सो आप तुरंत आपको फील होगा कि यू बिकम सेंटर्ड, एंड ब्रेथ पे आप काम कर सकते हैं. और ऐसे ही आप पर्टिकुलर अपने थॉट्स को लेके, जो भी आपके थॉट्स हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, या आपके कुछ पैटर्न बने हुए हैं, किसी के पैटर्न ये भी बने हो सकते हैं कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी, राइट? सो इज इट रियली ट्रू? आप इसको लिखिए, है ना? और जब आप इसके अगेंस्ट भी लिखेंगे ना कि कितने लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा नो वन अंडरस्टैंड्स मी, बट जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि देयर आर सो मेनी पीपल हु रियली अंडरस्टैंड्स यू. तो हमें अपने लिए उन चीजों को सॉर्ट आउट करना है, so that next time when that kind of thought came to our mind out of habit, we understand that that's not the truth, and we don't go in that kind of reflex mode, that kind of emotion, that kind of anxiety. So I mean the subject is very vast, but due to the limitation of time we can't cover much. But yeah, ये भी बिलीफ है कि हैबिट्स डाई हार्ड.
हैबिट्स डाई हार्ड, मुश्किल होती है। यस, तो मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने अपने माइंड में ऐसा बना लिया है। ऑब्वियसली जो पुरानी हैबिट्स हैं, हम क्या करते हैं कि हम पुरानी चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं। अब आप जितना पुरानी चीजों को ठीक करने में लगे ना, माइंड में बार बार उसी लूप में जा रहे हैं। अब उसको छोड़ दीजिए कंप्लीटली। लेट्स से आपकी पुरानी जो भी हैबिट है, आप नई हैबिट क्रिएट करने पे ध्यान दें। जब आप छोटी लाइन की जो है हमारी हैबिट, उसके अगेंस्ट आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे नई वाली हैबिट की, तो वो छोटी वाली अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। बट हमारा माइंड कैसे काम करता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करो। सो डोंट ट्राई टू फिक्स इट। जितना आप उसमें फिक्स करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज्यादा उसी लूप में जाएंगे। रादर देन शिफ्ट योर फोकस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यू हैबिट। डेली बेसिस पे आप उसे 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट से आपको वॉक करने की हैबिट डालनी है। आप ये मत सोचिए कि मैं वॉक करूंगा, आप डेली बस ये डालिए कि मैं उठ के पार्क तक डेली जाऊंगा। अफर्मेशन। एफर्मेशन नहीं, जाना है आपको। हाँ, बट आई मीन, हाँ, एफर्मेशन भी कर सकते हैं, वो आप ऑटो सजेशन कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जाके एक्सरसाइज करूंगा, जाके वॉक करूंगा, जाके योगा करूंगा, वो बात की बात है। फर्स्ट ट्रेन योर माइंड कि आप घर से निकले और पार्क तक जाएं। माइंड को ज्यादा बड़ा आप कॉम्प्लेक्स टास्क दे देंगे एक ही दिन में, तो वो माइंड भाग जाएगा आपका, बोलेगा अभी तक तो किया नहीं, मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप, राइट? सो जस्ट आप पहले 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए ट्रेन कीजिए, और आपने एक बार कंसिस्टेंटली जाना शुरू कर दिया तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, राइट? सो आपके माइंड को बहुत प्यार से आपको हैंडल करना है। जो भी नए हैबिट पैटर्न, उसको बेचारे को कोसना नहीं है, टॉर्चर नहीं करना है, अपने आप को बीटअप नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। अब जस्ट आप अपने लिखते रहिए नॉर्मल से पैटर्न, आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा कि कितना रियलिटी है इसमें जो भी आप सोच रहे हैं। और उसके बाद आप स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेंगे तो दोज थिंग्स विल वैनिश। यू जस्ट नीड टू सॉर्ट आउट फॉर योरसेल्फ, you just need to shift those conversations, shift those statements about you. That's all. It's Thank not you, simple at times, but यदि हम बोलेंगे, क्योंकि हमने बोला है, as you say so लैंडमार्क की बहुत बड़ी हमारी डिस्टिंक्शन होती है, as you say so। यदि आपने बोला है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो लाइफ ब्यूटीफुल है आपके लिए, आप ब्यूटीफुल चीजें निकाल लेंगे। आपने बोला है कि लाइफ इज डेंजरस प्लेस, तो वैसा आप निकाल लेंगे। सो हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, हमें एक तो अपने माइंड में हम क्या रिपीट करते हैं पूरे दिन और बोलते क्या हैं, उस पर बहुत ध्यान देना है। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड वी आर गेटिंग प्रेजेंट, मोमेंट वी स्टार्ट राइटिंग, I think we can sort out a lot of things for ourselves. So thank you so much all for being here. Thank you.